Hello everyone, it's me Avista Anwar, and in today's lesson we'll be reading unit number 1, Animals' Right in Islam, Showing Compassion. Class 10th English Language, National Book Foundation, Part 1. So let's start. Animals' rights are of paramount importance as they reflect our moral responsibility and compassion towards sentient beings that share our planet. जानवरों के हकूक़ इंतहाई अहमियत के हामिल हैं क्योंकि ये हमारी इखलाकी फ़राइज़ और हमदर्दी को ज़ाहिर करते हैं जो इस सियारे पर हमारे साथ रहने वाले एहसास रखने वाली मखलूक़ात के लिए हैं. Acknowledging and respecting the rights of animals is essential for fostering a harmonious coexistence. जानवरों के हकूक़ को तस्लीम करना और उनका एहतराम करना पुरअमन बक़ाए बाहमी को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी है. Animals, like humans, experience pain, joy, and the desire for a life free from unnecessary suffering. जानवर भी इंसानों की तरह दर्द, खुशी और बला ज़रूरत तकलीफ़ से पाक ज़िंदगी की ख्वाहिश महसूस करते हैं. Animal rights have been a subject of growing concern across the world. जानवरों के हकूक़ पूरी दुनिया में बढ़ती हुई तशवीश का मौजू रहे हैं. Islam as a comprehensive way of life addresses this issue with a profound sense of compassion and responsibility towards all living beings. इस्लाम बहैसियत एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी तमाम जानदारों के लिए गहरी हमदर्दी और ज़िम्मेदारी के साथ इस मसले को हल करता है. To understand the importance of animal rights in Islam, it is essential to examine the treatment of animals before the advent of Islam in the Arabian Peninsula. इस्लाम में जानवरों के हकूक़ की अहमियत को समझने के लिए जज़ीरा नुमा अरब में इस्लाम से पहले जानवरों के साथ सलूक का जायज़ा लेना ज़रूरी है. In pre-Islamic Arabia, animals were often mistreated and viewed merely as property. इस्लाम से पहले अरब में जानवरों के साथ अक्सर बदसलूकी की जाती थी और उन्हें महज जायदाद समझा जाता था. The harsh desert environment and the nomadic lifestyle of the Arabs contributed to a lack of awareness and sensitivity towards the welfare of animals. सहराई माहौल और बदवी तर्ज़ ज़िंदगी ने जानवरों की बहदूद के बारे में शऊर और हसासियत की कमी में किरदार अदा किया. Exploitation, cruelty and neglect were unfortunately prevalent practices. बदकिस्मती से इस्तेहसाल, जुल्म और लापरवाही आम रिवाज थे. They used to tie animals together and kill animals in front of other animals. वो जानवरों को एक साथ बांध देते और दूसरे जानवरों के सामने उन्हें मार देते. There were also customs where some body parts of animals were cut while they were still alive. कुछ ऐसी रसूमात भी थी जहाँ जानवरों के ज़िंदा रहते ही उनके जिस्म के कुछ हिस्से काट दिए जाते थे. It was also a tradition among some Arab tribes that when the owner of the rider of an animal died, his riding animal was tied to his grave and was starved to death. कुछ अरब कबाइल में ये रिवाज भी था कि जब किसी जानवर का मालिक या सवार मर जाता तो उसके सवारी का जानवर कब्र से बांध दिया जाता और भूखा मरने के लिए छोड़ देते. The advent of Islam marked as a transformative period in the treatment of animals. इस्लाम की आमद ने जानवरों के साथ सलूक में एक इनकलाबी दौर की निशानदही की. Numerous references in the Holy Quran and Hadith provide guidance on the ethical treatment of animals. कुरान पाक और अहदीस में मुतअद्दिद हवाले जानवरों के साथ इखलाकी सलूक की रहनुमाई फराहम करते हैं. There are more than 200 ayahs in the Quran dealing with animals. कुरान पाक में 200 से ज़ायद आयात जानवरों से मुतल्लिक़ हैं. 6 surahs of the Quran are named after animals or insects. कुरान पाक की 6 सूरतें जानवरों या कीड़ों के नाम पर हैं. These verses highlight the interconnectedness of all living beings. ये आयात तमाम जानदारों के बाहमी ताल्लुक़ को उजागर करती हैं. There is not an animal on the earth nor a bird that flies on its wings, but they are communities like you. ज़मीन पर चलने वाला कोई जानवर नहीं और ना ही अपने परों से उड़ने वाला कोई परिंदा, मगर ये सब तुम्हारी तरह की मुआशरे हैं. And the grazing livestock he has created for you, in them is warmth and numerous benefits, and from them you eat.
اور چرنے والے مویشیوں کو اس نے تمہارے لیے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے گرمی کا سامان اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ Hazrat Muhammad, peace be upon him, exemplified and emphasized the importance of compassion and kindness towards animals. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کی اہمیت کو عملی طور پر پیش کیا اور اس پر زور دیا۔ Whoever is kind to the creatures of Allah, he is kind to himself. جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے ساتھ مہربانی کرتا ہے۔ Once Hazrat Muhammad, peace be upon him, passed by a man who was dragging a sheep by its ear. ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو ایک بھیڑ کو اس کے کان سے کھینچ رہا تھا۔ He, peace be upon him, said, "Leave its ear and hold it by the sides of its neck." آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کان کو چھوڑ دو اور اس کی گردن کے اطراف سے پکڑو۔ Pulling an animal by the ears is more painful than pulling it by the neck. جانور کو کان سے کھینچنا گردن سے کھینچنے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حضرت محمد, peace be upon him, forbade beating animals on the face. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا۔ The face is more sensitive than other parts, hence it is more painful for the animal. چہرہ دیگر اعضاء کے مطابق میں زیادہ حساس ہوتا ہے، اس لیے یہ جانور کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ It is reported that he, peace be upon him, disliked making animals fight each other. روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو آپس میں لڑنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ When animals fight, they hit each other with full strength that causes pain to both. جب جانور لڑتے ہیں تو وہ پوری طاقت سے ایک دوسرے کو مارتے ہیں جس سے دونوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ, peace be upon him, forbade mutilating animals. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے اعضاء کاٹنے سے منع فرمایا۔ Mutilating is an act that is disliked even today. اعضاء کاٹنا ایک ایسا عمل ہے جو آج بھی ناپسندیدہ ہے۔ So that's it for today's lesson, everybody. I hope you liked this video. Stay tuned for part 2. Allah Hafiz.